Yeah, good afternoon, students. So today we'll be seeing the topic related to the microprocessor 8085, that is the classification of the instruction set. So as we have seen it in the last lecture, that there are the five groups are there. That is the data transfer instruction, arithmetic, logical, branching, and the machine control group is there. So here it is being specified as the control instructions. Okay, so what we have studied in the data transfer instructions, right? We have studied it the MOV instruction, MVI, LDA, STA. Okay. So is there any having the doubt in this four instructions? Anyone? Okay. So no one is having an issue. So we'll proceed further. Once again, I'll brush up all the things. MOV, what it is doing it is moving the instruction from the source register to the destination register. So that is from the right, it is shifting it data to the towards the left. So suppose if I'm taking the instruction as a MOV B comma E, what do you mean by this? That content of E register is being transferred to the B register. And one more thing, the content of E register remains unaltered. Okay, so that means it will be not be gonna changing, it will be remain as a unchanged value. So guys, just keep it in mind that it will be not be gonna cut paste, it will be gonna happening a copy paste it. Okay, so this is the important statement, just highlight it in your notes also. So MOV B comma E, so what it is happening is that B is also the register, E is also the register. That's why register to register the data is getting transferred. So that's why it will be known as the register addressing mode. Okay, so suppose if the content is being transferred from the memory, but not to the any another memory, but it will be only into the register. So that means what it is happening is the data is not being moved from the register, it is being moved from the memory. That's why it is coming under the category of a register indirect addressing mode. Okay, once again, if I'm taking it M over H comma L, so that is also considered under the register addressing mode and not to the indirect one. Why? Because H is a simply register, L is a simply register, right? So register to register, the data is getting transferred, so that means that will be known as a register addressing mode. Now when I'll be coming into the MVI is the move immediate. No doubt here also the content is getting moved. In this case also the content is getting moved. But in this case the content is getting moved from the register to register. Here the content, that is the 8-bit value, will be gonna move, like any sort of a 2-digit value will be getting transferred. So over here the value is getting transferred into the register. And as it is specifying the I, that's why it comes under the category of a immediate addressing mode. So this is nothing but the addressing mode over here. Okay, so over here MVI doesn't contains any sort of a different addressing mode. It will be consisting of only a immediate addressing mode, not the implicit, not the implied, or not for any register or any register indirect or a simply direct one. Okay, now I'm coming into the LDA and STA. So what happens in the LDA and STA, that the content of the accumulator is getting stored to the register, that is to the memory, or vice versa. So what happens in the LDA is that in the LDA, accumulator is vacant. Getting it? So accumulator is vacant. That means LD means what? LD is nothing but the load. So I need to load the data. So किसमें load करना है? So beside that only I have to see it. So that means I have to load it into the accumulator. So from where? To the memory location. So that is from the address I'll be gonna store the value to the accumulator. So if I want to store any sort of a value from the address to the accumulator, at that time I'll be using the LDA, or else if I want to do it in the vice versa format, then I'll be making use of a STA. Okay, so everyone is clear till here, and both are consisting of a 3 bytes, which is nothing but the direct addressing mode. Clear? So this thing we have seen it in the last session also. Now I'll be focusing it on the another one, that is nothing but the LDAX and STAX. So what does the LD says? LD says that it is a load.
LDAX. So load accumulator indirect. So here it is indirect. So is it so that it comes under the category of the register indirect addressing mode? Is it so, guys? Yes or no? Can anyone can tell me? Yes, you can guess it at least. If you're not sure, you can try. LDX, that is the load accumulator indirect. So yes, guys, addressing mode is correct that you are, if you are thinking it that it is specified as an indirect, so no doubt, yeah, the addressing mode becomes a register indirect only. But how, that thing we'll be seeing it now. Yeah. So basically over here, the syntax is that what we have to do it, that is load accumulator. So once again here LD, after LD it is being specified as a. So once again in this case also the accumulator is vacant over here. So what I have to do it, whenever I have as I have specified in the last lecture, that whenever it will be having the X, so that means it is signifies a RP. Register pair. Very good, excellent answer. So that means it will be specifying the RP. So over here syntax will be LDAX, RP will be there. Clear? So guys, how many possibilities will be there of the example possibilities? कितने हो सकते हैं इसके? How many possibilities will be there? Very good. Three possibilities are there, correct, according to you, because you might be thinking that there are the three pairs. No, one is HL pair, another is B pair, and the last is the D pair. So either I can take it B, or either I can take it D, but or either I can take it H. But over here, B is possible, no doubt. D is also possible, but we can't take it the H1 because HL pair is nothing but memory, no doubt. But from the memory only, I need to take the values. But how, we will see it now one by one. So only two possibilities are there in the LDX as well as in the STAX. So here you can't take it LDX A or LDX C, E, H, F, L, and so on, right? Or any sort of a value like 14, 20, 15, 99, any two digit value, or else if I want to take the address like that 6677H. So these all these things are not possible over here. Why? Because it is specified as a RP. So RP is nothing but the register pair, so which will be gonna store the register pair value to the accumulator. So in which format or how format, we'll be seeing it now. Just give me a sec, I'll show you in the proper format. Yeah, so over here, first I'll show it only for the B. Now guys, see, accumulator is vacant over here. Now this is for your reference. Huh? Accumulator is vacant. Okay. Now B means what? B is nothing but the BC, or D is nothing but the D. So now here if I'm taking it as BC is equal to suppose 2401H. Okay, H should be in the capital format. So what do you mean by this, guys? That LDX B is nothing but B,
the pointer is moving it for the B, तो B मतलब क्या हुआ BC, so BC के अंदर क्या है मेरा वैल्यू 2401, so ये 2401 मेमोरी लोकेशन के अंदर जाएगा पॉइंटर, and from there the pointer is taking the value and it will be moving it to the or else it will be transferring it to the register. But how it will be gonna transferring it? So over here, suppose now BC yeah. So the content of the designated register pair point to a memory location. So this instructions copies the content of that memory location and transfer it into the accumulator. Okay. So the content of either the register pair or the memory locations are not getting altered. So LDX B means what guys? कि B के अंदर जो भी content है, तो B के अंदर मतलब क्या? BC will be there, right? So BC मतलब क्या? So example is LXI. No, sorry, ये LXI is the different one. Here I guess it is not given. Yeah, so B and D register pairs are there. So B means what? B is nothing but the BC. So inside the BC, any sort of a memory location will be specified. Getting the point? So any memory location, so that means 2401 is I have taken it. So inside the 2401, suppose if I have taken the value as a 98H. Getting it? So अभी ये मेरा 98H value है. So 98 value is being transferred where? So it will be transferred it into the accumulator as a 98. So this is being moved indirect way. That's why this is known as a indirect addressing move, as well as it is known as a load accumulator indirect format. Clear? Everyone is clear with this LDX? Any doubt in this? मैम हाँ बेटा. मैम इसका कोई साइज नहीं है? हाँ बेटा, साइज है ना. इससे बाकी इसका कितना है? Of course, इसका size है. The size of the accumulator is the 8-bit. The size of the any sort of address is the capacity is the 16-bit. But it will be Okay. not a byte. But it will be storing only a 2-bit, 2-digit data. That is, it will be storing the 8 bits data. Why? Because accumulator size is 8 bits, so accumulator can't take it 16-bit. It will be taking only 8 bits. So that's why it is taking the 8-bit content and transferring it into the accumulator. That is, the 8-bit is getting transferred. So मतलब मेरे पॉइंटर B के पास जाता है, तो B मतलब क्या है? BC. जब कम पॉइंटर आता है BC के पास, तो उसको पता चल गया कि BC मतलब कहाँ पर पॉइंटर स्टोर है? 2401. सो वो मेमोरी लोकेशन के अंदर जाता है. मेमोरी लोकेशन मतलब एक डेटाबेस होता है, वहां पर डेटाबेस में इट मूव्स एंड इट फेच फॉर द 2401. 2401 के अंदर वैल्यू जाके चेक करता है, क्या है वैल्यू? 98. So this value is getting captured and then it is being thrown into the accumulator. So in this way, the value is getting pasted into the accumulator. While the content of the 2401H is there, which will be remaining unaltered. So which will be not be gonna changed. Okay, as it is being specified on the third line, last line. So everyone is clear with the LDX. Now straight away. मैम मतलब एक्यूमुलेटर में जा रही है, इसकी वजह से वो उसको स्मॉल करके डाल रहा है. मैम एलडीए में भी तो एक्यूमुलेटर में जाता है. हाँ, एलडीए में जाता है बेटा, नो डाउट एलडीए में जा रहा है, बट एलडीए में क्या है? एलडीए व्हाट इट इज कंसिस्टिंग? इट्स एड्रेस. एग्जैक्टली, इट इज कंसिस्टिंग द एड्रेस. सो किसी एड्रेस वैल्यू एक्यूमुलेटर में डालना है तो एलडीए यूज कर सकते हैं. किसी रजिस्टर पेयर से वैल्यू डालना है तो मुझे एलडीएक्स यूज करना है. गेटिंग इट? सो एड्रेस, रजिस्टर पेयर, मेमोरी लोकेशन, सब ये सब अलग अलग चीजें हैं. Clear? Now exactly opposite of a LDAX is nothing but the STAX. So that is the content. STAX means what?
store the content of accumulator. So this means accumulator value is fulfilled over here. So suppose if I want to transfer the data from the accumulator to any another address, but that too via a pair, that is to the register pair, then I'll be making use of a STAX. So that's what it has been specified in the syntax, STAX RP, that is a register pair. So store the accumulator indirect. So accumulator content will be gonna transfer it to the memory location, which is specified by the content of the register pair. Clear? If you want to see it one more slide, I'll just have a look. See over here, these are the examples: LDA, LDX. See, either B or D register will be there. Why H is not there? Because H is nothing but the HL pair. So here we are making use of the HL pair only, internally. So HL se HL, it's some sort of a tricky way. So that's why in the LDX and STX, there are only two possibilities, not the three. And yeah, one more thing, guys. LDAX, so accumulator का value कितना है? Size कितना है? 1 byte. Exactly, 1 8 byte है. bits. So 1 byte ही data transfer हो रहा है मेरा. So that's why the size of the LDAX and STAX का कितना है? It's having only 1 byte. Clear? So this is the technical reason you should be keeping all this thing in mind. Clear? Yes, ma'am. Okay. Now CSTX. Yeah. Over here, STX, once again, see, store the content of accumulator to the register pair. So register pair, accumulator का value register pair में, but register pair क्या है? So it might be any register, B होगा या फिर D होगा. So pointer मेरा B के पास जाएगा या फिर D के पास. So when the pointer is moving to the D, so D is nothing but DE. So DE के अंदर जो भी मेरा memory location specified है, like 1 2 3 4 H है. So वहां पर मेरा जो accumulator का content है, that 1 byte data will be getting transferred into the into the register pair. That is into the addresses, memory location. Getting it? Yes, So ma'am. this is about the STX and LDX. Now, when I'll be coming to the next instruction, LHLD, and then we'll take it SHLD. Now LHLD and SHLD means what? L means what? Once again, here it is known as a load. So किसको load करना है? So beside that only we have to see it. So HL pair, that means in this case my HL pair is vacant over here. Getting it? So from the any sort of a address, I want to move the transfer the data into the HL pair, then I'll be making use of a LHLD. So that means 2040 value content will be moving it to the HL pair. So at that time, I'll be making use of a LHLD. And it's totally opposite about the SHLD. That means if I want to transfer the SHLD, HL data to the any sort of a memory location, then I'll be making use of a SHLD, which stands for the store H and L direct. Okay, I'll be just specifying you properly over here. This is for your reference only, guys. This one thing, as I have specified it. Yeah. So next is LHLD. So over here, load H and L
register direct. Clear? I hope everyone is listening. Yes, ma'am. Okay, Akash is effective. What about others? Yes, ma'am. We are also active. Okay, Shivraj, Lokesh. Always active. Okay, so if you're active, just give the answers also. So over here, LHLD load H and L register direct. So see guys, what happened in this case? The first syntax format, that is the syntactical, is LHLD. क्या होगा? ADDR. That means address. See, keep it in mind, for each and every instruction, the syntax should be on the tip of the tongue. If you are clear with the syntax, no doubt straight away you'll be getting the proper flow of the programming. Okay, so for that purpose the syntax should be perfect. Syntax आया तो bytes याद रहेगा, bytes आया तो obviously with the help of the syntax you will be able to clear with the addressing modes. Obviously we will be clearing it with the flags, and then you will be clearing it with the programming format. So over here LHLD ADDR. So example, how many possibilities will be happening it? कितने possibilities हो सकते हैं? Many, multiple, right? तो multiple मतलब कैसे? So as much as n possibilities may be there. So now you will tell me ये सब valid है या invalid है? Valid है? Yes, ma'am. Valid है? नहीं नहीं है शायद. क्यों? एक सेकेंड. अभी valid है? हाँ मैम. Very good, perfect. Now tell me this one is valid? Yes, ma'am. Very good. This is also valid. This is valid? Yes, ma'am. Yes. Very good. Ma'am. Then now tell me this one is valid? Is it valid? Yeah, yes. Yes, ma'am. किसने बोला yes? Aditi? नहीं मैम बाय मिस्टेक करा जैसा. This is wrong. A C E F valid है? ये wrong मतलब how come it is valid? Tell me. मैम वो आएगा ना सारे हेक्साडेसिमल नंबर्स में. और किसी ने तो no बोला था. कौन है वो no बोलने वाला? ये valid क्यों नहीं है? कोई बता सकता है? ये face मतलब normal human face है, like that. Don't come go through with the words. Just go through with the each and every binary form. Valid or invalid? Once again, I'm asking you. Valid. Yes, Valid, ma'am. correct answer. Valid. Correct answer. It's valid. Now tell me, is it valid? DADA. Sorry, DAD. Only dad. Dad H. No, ma'am. No, Yeah. ma'am. Why? The reason is because this is the 3-bit. Now this is valid. Yes, this is also valid. Yes, ma'am. Now tell me about this one. Not valid, ma'am. Yes, correct. क्योंकि F तक ही होता है. Now, is it valid? No. Because R is not supported. Yes. Can I take it this one? Is it valid one now? Yes, ma'am. Okay. Now, this is valid. Adobe. No, ma'am. No, ma'am. क्यों? Valid है ना? वो आ गया ना, ओ नहीं आना. अच्छा 0 है तो ठीक है, ओ रहेगा तो नहीं आना चाहिए. Yes, very good. Good presence of mind. This is nothing but a 0 and this is not a O. But while reading it, we take it in the Adobe, right? So just be specific with the terms. So board exam में ये एक first वाला ये जो है ये पूछा गया है. So it's not a Adobe, it's a AD0B. Okay. So इसका consecutive memory location Yes, क्या ma'am. आएगा? So that is nothing but a AD0B के बाद AD0C आता है. So now whichever the things I've specified over here, इसका सबका consecutive memory location सबको पता है? Consecutive मतलब क्या? Connecting one. 1 2 3 4 के बाद 1 2 3 5. A के बाद A 1. 0 0 0 1. FAC F. DAD B. CE 1 3. AD0 C. करेक्ट? सबको समझ में आया मैंने क्या बोला अभी है? Yes, ma'am. या
So मैम what सिर्फ Yes, वो ma'am. ए मैम ए एक ए बार बी वापस होगा एक ना? इसमें A B, A के बाद B होता है ना? हाँ हाँ Yeah. So over here, what exactly happens is that LHLD and SHLD, as I have told it, that load करना है किसको? So it will be loading H and L, but from where? So it will be storing it from the addresses. Getting it? So which addresses? So now I'm taking it this one example. I'll explain you one example. Just mute your call, beta. किसका भी है चालू है? Mute your call. Siddhant. Yeah. So over here LHLD 1 2 3 4. So what it will be happening it guys 1 2 3 4 मतलब consecutive 1 2 3 5 भी रहेगा साथ में. So in this case HL pair is vacant. So suppose if I'm taking the 0 4 H and here it is taking it as a 23 H. Chicken or else I'll take it as 0 1 H. Yeah. So this will be gonna transfer it into the H and L. So now guys, one thing keep it in mind, highest memory location value will be gonna transfer it into the highest one, that is H, lowest memory location value which will be transferring it into the L. So abhi 1 2 3 4 is greater or 1 2 3 5 is greater? Yes, मैम 1 bolo. 1 2 3 5 2 will 3 be 5 greater. Yes, now just keep it in mind, don't focus on the value. If you see it properly, 4 is greater or 1 is greater, no doubt 4 is greater, right? But highest memory location yes value, that will be gonna transferring it into the H, that is it will be moving it into the H register, and lowest memory location value which will be gonna transferring it into the L. So now this is the known as the after execution and this is the before execution. So yeah, same thing SAE, but in the tabular format you need to specify it in the board exam. Clear with this? yes ma'am. Yes, ma'am. Yeah. So over here, after execution value. So guys, one is in the after execution, one is greater or 4 is greater? 1, ma'am. 1. Very good, excellent answer. So 1 is the greatest value. So pointer, always keep it in mind, whichever the value in the H register is there. Even though if I'm having the value as a 0 0 H, so keep it in mind that 0 is greater. Pointer never ever check what is the exact value inside that. If it is inside the H, that means it will be the highest value. If it is inside the L, that means it will be specified as the lower value. Clear? So now guys, same it is Yes ma'am. totally opposite of LHLD is nothing but the SHLD will be there. Okay. So over here, SHLD, what it is happening it that H and L is being stored. It is already loaded. So store the content from the HL to the register pair. Clear? So store H and L direct. So अभी यहाँ पर possibilities same ऐसे ही possibilities हो गए. No doubt. All the things will be same. सिर्फ LHLD की जगह पे क्या होगा? It will be having a SHLD. Clear? Everyone? Yeah. So once again, you will be telling me the possibilities whether it is correct or not. मैम आवाज नहीं आ मैम रही थी आपकी थोड़ी आपकी देर पहले. आवाज नहीं आ रही थी अभी, कट हो गया था पूरा. Okay, आवाज नहीं आ रही थी क्या? हाँ Just a sec. Yeah. Now you're getting the voice.
Yes, ma'am. Okay. So over here, now, once again, the totally opposite of the LHLD is SHLD. But in this case, SHLD, H and L register is already loaded. So from the H and L, we'll be transferring the data into the ADDR. So over here, just once again, I'll be rechecking you that whether this syntaxes or this examples are valid or not. Okay, tell me. SHLD 1, 2, 3, 4 valid hai? Valid hai? Yes, ma'am. Now Yes, ma'am. 0090 ये valid है? 90. Yes, हाँ 7777 valid Yes. है? yes, ma'am. Yes, yes. Okay, now tell me 2020, is it valid? Yes, बिल्कुल नहीं ma'am. Yes, yes. Yes, very good. This is also valid. Now, if I'm taking it A, B, mm, A, B, is it valid? Yes, ma'am. yes, ma'am. Correct. Yes, This is also valid. Now tell me this one. 0989. Yeah, is it valid? No, No, ma'am. ma'am. oh, No, no. क्यों valid क्यों नहीं है ये? K K लिखा है है ना? ना? K. Very good. So K is not supportive. Now J078. नहीं, फिर भी G. No, नहीं. ma'am. Okay, so G, J, K, so these are not a supportive one. S, it's not a supportive one. Z, it's not a supportive one. Okay, and now last one. Tell me, is it valid or not? Yes, this is valid or invalid? No, ma'am. no, ma'am. Invalid. Yeah. Okay, so these are the possibilities. You are supposed to keep it in mind. Okay, clear? So I hope now इसमें क्या होगा? Same ऐसे ही फंडा है. Only before execution, after execution, value will be getting transferred in the opposite way. So here, SHLD. Oh. Okay, you tell me which one example shall I take it instead of 1, 2, 3, 4. Tell me anyone. If you want it, I'll do it for you. Say F001 which one? S001. F Okay, F. Okay, so over here, F001. So consecutive memory location, it should be clear. So that is nothing but a F001 is nothing but having a 02 control V. All right. So in this case, what it is happening, it HL pair is full field. Getting it? So Yes, over ma'am. here, मैम रिपीट कीजिए क्या बोला हाँ बेटा रिपीट करो जस्ट अ सेक Yeah, so what happens in the SHLD, that SHLD H and L is already loaded over here. Clear? So suppose if I'm taking it any value, like if I'm taking it as 67H and here I'm taking it a
B4H. ओके, सो अभी ये मेरा बिफोर एग्जीक्यूशन वैल्यू है. So before execution value मेरा H and L में the value is stored. So what will be the my after execution value? क्या स्टोर होगा बताओ? F001 में B4 स्टोर हो जाएगा, B4H, Yes, और correct. F002H में 67H. Very good. Yes, others, it is understood to you. So just keep it in mind, guys. जो भी मैंने ऐसे presentation लिखा है, same way you'll be presenting it on the paper also. So HL is loaded already over here. So F001, which will be gonna store the, this is the lowest value. So lowest value is L, right? So B4. So it will be gonna storing it the B4H, and if I'm moving it over here, so it will be having a F. Consecutive memory location should be by hearted, guys. So keep it in mind, if you are aware with the consecutive memory location value, that value only you will be taking it in the board exam, or else don't take a risk of any another like different memory location which you are not at all aware. Okay, so simple thing है, अगर नहीं पता है तो 2000 ले लो, 2001, 2002, 2003 and so on till 2009. You just be simply aware with the consecutive memory locations only 2, not more than that. Yeah, Dolly. XD, what do you mean by this, Sahil? 6969 ABCD 1 2 3 4. Okay, yeah. Okay, so clear with the LHLD, SHLD. Any doubt on that? Now come to the LXI. See, LXI, what do you mean by LXI? That L means no doubt load करना है. किसको load करना है? So beside that you will be saying it. That means I'll be loading the register pair. So that means here the syntax becomes LXI RP comma ADDR. See, RP comma 16-bit data. ADDR is nothing but the address. Address is consisting of 16-bit data. So LXI syntax क्या है? LXI RP comma 16-bit. So matlab opcode is nothing but my instruction and operand is nothing but my further syntactical format will be there. Okay, so what do you mean by the state? State मतलब जिसको हम लोग full form बोलते हैं. So state क्या है? So load register pair immediate. So L stands for the load, X stands for the register pair, I stands for the immediate. Clear? So in this case, what we have to do it. So suppose if I want to store it any memory location address to the HL pair, at that time I'll be taking a LXI. Now you might be thinking, guys, कि LHLD में भी ऐसे ही किया था. Yes or no? Suppose if I'm taking it LHLD, तो वहां पर भी H है ना, जैसा भी in this case LXI H is there. But keep it in mind, LXI B भी ले सकते हैं, LXI D भी ले सकते हैं. There are the 3 possibilities, right? Here the register pair I'm using it, okay? But now if I'm coming it only and only to the LXI H comma 2034, and if I'm focusing it on the LHLD 2034, so ये दोनों में changes क्या होंगे? Can anyone can tell me? Let's see who is getting the answer. Yes, Vanshika. What is the difference between the LXI H comma 2034 and LHLD 2034? LHLD में जो वैल्यू स्टोर होगी वो HL पेयर में होगी, इसमें कोई भी रजिस्टर पेयर में हो सकती है. कोई भी नहीं बताया, स्पेसिफाई नहीं करा. स्पेसिफाई किया ना मैंने अभी तो बताया. हम यहाँ पे BDH वाले इसमें होगी. देखो, I'll explain you. LXI 2034, ठीक है. H and LHLD 2034. अभी बताओ क्या डिफरेंस है ये दोनों में.
See the difference is anyone or pass बता दो or you want to think it for a few seconds. LXI में ये एड्रेस की जो वैल्यू होगी वो H पेयर में जाएगी। Correct, correct. And LHLD में ओके ओके ओके। LX है तो LHLD में perfect है। L में जाएगी। L तो लोड है बेटा। अच्छा ये वाला L मैम LD वाला LH हाँ उसमें L में जाएगी L रजिस्टर पे। Akash, as you have said it, it's correct. But only one thing you forgot to specify is that LHLD will be gonna storing the consecutive memory locations. That means here it will be having the specification for the 2035H also. But in this scenario, in the Alexa H, so sorry, it will be having a Alexa H 2034. That means in this case, load. Very good, good attempt. Your 95% the answer was correct, Akash. So load immediate 2034H value, that is the address value, into the HL pair. Okay, no doubt guys, if I'm taking it here as a B, so वो BC में जाएगा, D तो DC में, DE में जाएगा. Okay, but why I have taken this example that it may get confused to the students ना, क्योंकि यहाँ पर भी तो LX है, यहाँ पर भी तो एड्रेस का वैल्यू HL पेयर में जा रहा है. In this case also एड्रेस का वैल्यू HL पेयर में जा रहा है. बट बच्चा लोग यहाँ पर एड्रेस का वैल्यू HL पेयर में जा रहा है, बट इन दिस केस 2034 का वैल्यू L में जा रहा है, 2035 का वैल्यू H में. That means in this case the two addresses is being specified, but over here only one address is being specified. So now some students might be thinking कि अरे ये एक एड्रेस का वैल्यू इसमें H के अंदर कैसे जाएगा. So over here, let me clear you this point also. So 20 ka value is there, that will be moving it to the H, and 34 value is there, that will be moving it into the L. Okay, so that was the behind reason. So this is the major difference which is being asked it in the Viva exam by the external. Clear? So this is about the मैम हाँ बेटा मैम बोलो ना क्या हुआ से बेटा क्वेश्चन मैम वो एलेक्सा वाला एक बार और एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है यू वांट मी टू वो एक्सप्लेन एक ही एड्रेस दो. या वो 2034 वाला एक बार. okay not an issue I'll explain you both the ways see now Alexa में क्या होता है Alexa is a syntax which is known as Alexa RP 16-bit data. So that is nothing but the 16-bit data is gonna transfer it into the RP. So RP मतलब क्या है register pair है. So suppose if I'm taking it a B तो B और C हो गया. तो B एक 8-bit register store करेगा और C जो है वो 8-bit register store करेगा. So which will be moving it to the B हो गया upper register, C हो गया lower register, D हो गया D for Delhi which is the upper register, E for Eloraj, so that is storing the lower register. Same for H and L. So H will be having a highest one upper and L will be storing the lower one like that. I hope now it is clear. So over here, why it is having the LXI? So LXI मतलब RP कितना लेता है मेरा? RP is having the 16 bit. So 2 और जो भी मेरा data है वो 1 byte का होता है. So that is 2 plus 1. So which is nothing but is having the size of a 3 byte. So this is the behind reason that how the data size is getting accommodated. So I stands for the immediate, but as I have explained you, I immediate is always having the size of a 2 byte excluding LXI, which is consisting of a 3 bytes in the data transfer group and which comes under the immediate addressing mode. And last but not the least is flag affected. Yes, now let me come to this point guys कि flag affection मतलब यहाँ पर simple फंडा है that whichever the instructions which are related with the data transfer group, so these are the registers, no?
So overall, all the registers in this groups are none of the flag is getting affected. Just make a note of this. Clear? So it's easy to keep it in mind over here. None of the flags are affected. ठीक है, just highlight this point everywhere. So मतलब ये हर एक MOV आया, no flags affected, MV आया, no flags affected. तो no flags मतलब क्या guys? So no flags means sign, zero, auxiliary carry, parity carry. So these are the different flags are there. So in this cases, sign flag ho, zero ho, auxiliary carry ho, so this all these flags are not getting affected. Why? Because there is no any binary or any sort of a logical calculations are being happened. What is happening it in this group is simply यहाँ पर data transfer हो रहा है. So either the data is getting transferred it from the register to register, or from the memory to the register, or vice versa, or from the what we say register to memory, or register to any addresses, or addresses to the any register pair, or vice versa. So that means from one place I'm picking up the data and transferring it to the any another place, that is in the any another location. So that's what the task is being happened in this group. That's why the name is being specified as the data transfer group. Clear? So why the name is being given for this group as the data transfer group? Yeah, so over here, yes, I guess Aditi has asked me. So Alexa, h comma 2034h is dear beta, what it is happening it कि 20 जो है h है, 34 is L. So the content of 20 will be storing it into the H, and 34 which will be storing it into the L. See, as it is I have highlighted. So here 20H is stored in H register and 34 is stored in L register. Clear? Clear with the concept beta? Any another student is having doubt, please ask me right now, because the group is getting over now. I need to start with another group. मैम 3 बिट्स नहीं समझ में आया, मतलब 3 बाइट्स कैसे आया? 3 बाइट कैसे है? अभी मुझे बताओ बेटा 2034 कितना है? 2 बाइट. 2 बाइट का कैसे आया? कैसे समझ में आया? क्योंकि एड्रेस है. हाँ, एड्रेस एड्रेस 16 बिट का होता है, मतलब 2 बाइट हुआ, राइट? और एच क्या है? एक ही है ना, सिंगल लिया है इन्होंने रजिस्टर, तो वो कितना हो गया रजिस्टर? 8 बिट का हो गया, मतलब कितना बाइट हुआ? 1 बाइट. तो 2 + 1. मैम बट यहाँ पे तो हम रजिस्टर पेयर ले रहे हैं ना, मतलब एच और एल दोनों. हाँ बेटा, बट वो इंटरनली जा रहा है. दैट इज जस्ट सी, ये जो स्पेसिफाइड है ना, दिस इज नथिंग बट द वर्किंग इज बीइंग हैपेंड इंटरनली, which is not exposed everywhere. This is internal work is there. So that's what I have also explained you. So what we are saying it over here, that thing I need to write it. So as I have seen it, so this is the address, which is accommodation of a 16 bit. तो ये मेरा 2 bytes हो गया. जा रहा है किसके अंदर? H के अंदर ही ना. तो वो इंटरनल हम लोग को पता है 20 का H में जा रहा है, 34 का L में जा रहा है. Like that. Okay ma'am. Yeah. So while in the from the form of the instruction, it is having only H. So that is only a 1 byte. So which will be a 1 + 2, like that. It is consisting of a 3 bytes. Clear? Now. Yes, ma'am. Okay, Falguni. So now, I guess the last group is remaining, that is SHLD and LHLD. So we'll see it, SHLD. This is also the very, very simpler way. No, I guess we have seen this. I just need to specify over here. Yeah. So अभी यहाँ पर SHLD, LHLD का कितना bytes होगा guys? Tell me. Syntax में देखो. ADDR एड्रेस मतलब कितने बाइट का हुआ? 2 बाइट. 2 बाइट का हुआ. जा रहा है किसके अंदर? HL. HL के अंदर, बट इंडिविजुअल में जा रहा है ना. कैसे अभी इंडिविजुअल में? तो देखो लाइक अभी SHLD F001 ना, तो F001 मतलब ये क्या है? इसके अंदर B4 है, तो मतलब वैल्यू कितना है ये मेरा? ये वैल्यू कितना है? 8 बिट है, 16 बिट है?
8 bit है. Exactly. So this is being moved into the this 8 as well as this 8 individually. Getting it? So that means address जो है मेरा 2 बाइट का है और ये इंडिविजुअल H के अंदर जा रहा है या इंडिविजुअल L के अंदर जा रहा है. Getting it? So that means 2 plus 1. So it will be having a 3 bytes over here. So this is the behind reason that how the data accommodation. ये अभी भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा. I assure you. समझा ही नहीं होगा कुछ लोगों की, यार ये 2 बाइट कैसे है, 3 बाइट कैसे है, मैम तो ऐसे कैसे बता रही है, यहाँ पर तो एड्रेस है, यहाँ पर तो 2 बाइट है, इस जगह पर एड्रेस है बट एक ही ले रही है मैम, एच ही ले रही है, एल क्यों नहीं ले रही है, लाइक दैट, राइट? few students might be thinking in this way. I'm sure about that, but don't worry student, the one who are thinking in this way, that will be also getting cleared when you will be doing it with the programming part properly. At that time you'll be clear ki how exactly the ma'am used to tell us that yeah this is the 2 byte or 3 byte as concept is. Okay, so अभी भी कुछ लोगों को सिर्फ बाइट में डाउट है, नॉट एन इशू, वो भी क्लियर हो जाएगा. ठीक है, this is just a simply a starting part is there. You have to do so many things related to the LDSTA as well as with the SHLD LHLD. Okay, so now only one instruction is remaining, that is nothing but the XCHG, which is known as the exchange with H and L with the D and E. ये state हो गया इसका. ठीक है, तो XCHG तो बच्चे लिखते वक्त EX लिखते हैं. So keep it in mind, exchange is exchange, like that. Clear? So yeah, once again this is XCHG, here the operand is absent. So इसका मतलब क्या है guys कि यहाँ पर combination में कुछ भी नहीं आने वाला है. That means exchange H and L with the D and E. तो ये state है. So if I want to transfer the data from HL to the DE, then only the user is going to make use of the XCHG instruction, or else the user is not going to use the XCHG instruction. Keep it in mind. अभी तुम लोग बोलोगे, you might be thinking कि HL is the pair, D is also the pair. So can I take it a B pair मैम also? आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है. Hello. Now it's clear. यस मैम, थोड़ा सही हुआ. Okay. बाकी लोगों को आ रही है ना आवाज? या डाउट है कुछ? Yes, ma'am. Okay, so XCHG में क्या हो रहा है? Exchange हो रहा है. So exchange H and L content with the D and E. So few students might be thinking कि यहाँ पर HL is nothing but a pair, D is also a pair. So यहाँ पर B pair भी ले सकते हैं, मतलब HL pair का content I can move it to the B pair or vice versa, or I can transfer the D pair content to the B pair and vice versa, right? So मैम आपका वॉइस गया. no, नहीं मैम, आकाश आ रहा है. आकाश आ रहा है, आ रहा है. voice is coming beta. Just for few sec I was quiet. Okay, so over here you might be thinking in this way ना कि B pair क्यों नहीं है. So अगर सिर्फ मुझे HL pair का value ही D pair के साथ transfer करना है, at that time only I'll be making use of XCHG. So keep it in mind, it's not like that D pair is given the highest priority and B pair is given the lowest priority. That's why what we say, this instruction is being invented. It's not in that way. Let me clear you this thing. Only the thing is that HL pair is nothing but the memory. So अगर मुझे D register pair से transfer करना है data into the HL pair, that time only I'll be making use of a XCHG instruction. Okay. So yeah, इसका size कितना होना चाहिए? Here, as you are seeing it on the screen, 1 byte है. You got to know that. But can you explain me how it is a 1 byte? The answer is too simple. See, the answer is in front of you only. You can take a screenshot of this. I hope everyone is taking it simultaneously.
Yes, can anyone answer? Not a single student. You're getting the voice, no? Yeah, मैम Falguni. एक रजिस्टर का दूसरे रजिस्टर के साथ एक्सचेंज हो रहा है तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सिर्फ 1 बाइट का होगा। वेरी गुड। मतलब यहाँ पर h का सिर्फ d के अंदर जा रहा है, तो h कितना था? 8 बिट। तो 1 बाइट का डेटा सिर्फ 1 बाइट के अंदर ही ट्रांसफर हुआ। l का डेटा e के अंदर जा रहा है, एंड वाइस वर्सा। सी द ऑब्जर्व इट ओवर हियर, द एरो इज बीइंग बाय डायरेक्शनल वे। सो h का वैल्यू d के अंदर जा रहा है एंड वाइस वर्सा, l का वैल्यू e के अंदर जा रहा है एंड वाइस वर्सा। मतलब एक ही वैल्यू ड्रॉप हो रहा है एक ही रजिस्टर। सो 1 बाइट का ही ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ 1 बाइट। क्लियर? मैम बोलो आकाश। आपने बोला था ना कि वो डी के बजाय बीसी नहीं हो सकता, वो हाँ बताइए हाँ ना हाँ। फिर से। सी बेटा बी सी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर मतलब डोंट थिंक इट इन दैट वे कि यहाँ पर बी सी क्यों नहीं है। तो डी का हाईएस्ट प्रायोरिटी इसलिए डी है, बी का लोएस्ट प्रायोरिटी इसके लिए नहीं। तो ऐसे कुछ प्रायोरिटी वगैरह वी आर नॉट एट ऑल सेटिंग, एंड इट्स नॉट देयर आल्सो, इट्स ओनली देयर इन द हार्डवेयर इंटरप्ट्स, लाइक ट्रैप इज गिवन द हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड INTR इज गिवन द लोएस्ट प्रायोरिटी, लाइक दैट। बट इन दिस सिनेरियो इट्स नॉट लाइक दैट। मैम सिर्फ अगर मुझे, हाँ बेटा, मैम कोई भी दो रजिस्टर के बीच में ट्रांसफर कर सकते हैं? कोई भी रजिस्टर, दो रजिस्टर पेयर के बीच में। हाँ तो यहाँ पर 2 रजिस्टर पेयर ही है, तो कोई भी नहीं, सिर्फ डी पेयर एंड HL पेयर को ही एक दूसरे के साथ ट्रांसफर करना है, तो ही हम लोग ये कोडिंग में एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन इम्प्लीमेंट करेंगे, और एल्स वी वोंट बी डूइंग इट लाइक दैट। ओके मैम। ओके, एंड या वन H और मोर P थिंग। नहीं करेक्ट। हाँ हाँ बेटा, HL एंड DE के साथ ही है। And one more thing I want to tell you that this instruction is very minimal used in the microprocessor programming, like assembly language programming. I guess hardly 4 to 5% will be using this XCH instruction. And one more thing, if the question is being asked with the help of the exchange instruction, then only we'll be making use of this thing. Okay, or else it won't be required. Fine. So now here we have completed with the XCH instruction. Yeah, so in this program, that load memory location F300H with the data 29. So I need to transfer the data into the register B. So how I'll be transferring the data, guys? Question समझ में आया? That means F300 is vacant. That means what I want to do it, I want to load it. What data? Which data? 29. So 29 value जो है, I want to store it into the F300. Getting it? And transfer the data into the register B also. मतलब ये जो value है, ये मुझे register memory location में डालना है. So मतलब ऐसा कौन सा instruction है जो value मेरा memory location में store करेगा as well as मेरा register में भी store करेगा. So first important thing, guys, keep it in mind in the hardware programming is that whenever the data is getting transmitted, okay, it will be moving it via accumulator only. Make a note of this. Write down in your notebook. Once again, I'm repeating the statement. Whenever the data is getting transmitted in the assembly language program, the data will be transmitted via accumulator only. Clear? So now ये जो value क्या है? 29. And हाँ, one more thing, second point ये भी note down करो कि via accumulator only my data will be moved according to the aim of the program. So aim of the program कुछ भी हो सकता है, like exchange, reverse order, multiplication, addition, division, then hexadecimal to the ASCII code conversion. So ये सब एक programs करने हैं ना guys हम लोग को, और ये सब important है जो भी अभी मैंने बताया. समझ में कुछ भी नहीं आया होगा, no doubt, but ये सब करना है तुम लोग को. So according to the aim of the program, तो मतलब जो भी मेरा value है that will be moving via accumulator. तो मतलब
प्रायोरिटी क्या है, एक्यूमुलेटर है ओवर हियर इन द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम. सो गाइस कीप इट इन माइंड, जैसे C++ में होता है कि कोई भी मेरा वैल्यू डिसाइड मतलब डिक्लेयर करने से पहले व्हाट वी डू इट, वी डिक्लेयर इट विद द डेटा टाइप, देन वी क्रिएट द फंक्शंस, देन वी क्रिएट द multiple functions, then we close the class, then we start it with the main function. Inside the main function instantiation process होता है, फिर function calling concept होता है, और फिर last में return 0 या फिर get ch लिख के body close करते हैं. तो ये कैसे proper format हो गया मेरा पेपर 1 प्रोग्रामिंग का. सेम वे पेपर 2 की प्रोग्रामिंग का फंडा ये है कि जो भी मेरा वैल्यू ट्रांसफर होगा वो वाया एक्यूमुलेटर ही ट्रांसफर होगा. अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एक्यूमुलेटर ही क्यों. So because accumulator always stores the result of the arithmetical and logical operation, and that too with the very highest priority. That's why via accumulator only the data will be getting transmitted according to the aim of the program in the further procedures. ठीक है. सो अभी सबसे पहले का एम क्या है मेरा, अभी 29 है, वो मुझे क्या करना है एक्यूमुलेटर में. सो ये वैल्यू है एक्यूमुलेटर में मूव करना है, तो मूव करने के लिए इंस्ट्रक्शन कौन सा है, MOV है एक है और एक MVI है. बट अभी ये वैल्यू मूव करना है तो मतलब MOV आएगा क्या गाइज, नो. सो दैट टू इज अ MVI 8-bit डेटा. तो 8-bit डेटा क्या है 29. ठीक है. तो मतलब अभी ये स्टेटमेंट से क्या हुआ गाइज, MVI 29 मतलब A इज इक्वल टू 29 आया. समझा. अभी एक्यूमुलेटर में मेरा ट्रांसफर हो गया, अभी मुझे किस में ट्रांसफर कर रहा है, F300. सो अभी ऐसा कौन सा इंस्ट्रक्शन है जो एक्यूमुलेटर से मेमोरी लोकेशन में जाता है, थिंक ऑन दैट. तो जब हम लोग सोचेंगे अभी ये तुम्हारे सामने तो डायरेक्टली क्वेश्चन है एज वेल एज आंसर इज बीइंग स्पेसिफाइड, ओके. बट जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो कैसे सोचना चाहिए, दैट थिंग आई एम एक्सप्लेनिंग यू, so that in this way only you should be thinking while generating the assembly language program. समझ रहा है बच्चा लोग. सो एक्यूमुलेटर से वैल्यू अगर मेमोरी लोकेशन में ट्रांसफर करना है तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन एक ही है जो कि STA है. गेटिंग इट. तो ST मतलब क्या, स्टोर. एक्यूमुलेटर में वैल्यू है तो एक्यूमुलेटर से मेरा वैल्यू आ गया ना F300 में, तो मतलब फर्स्ट एम कंप्लीटेड. यस और नो, समझा सबको. यस मैम. ओके. अभी क्या कहा है क्वेश्चन में कि ट्रांसफर दिस डेटा आल्सो इनटू द B रजिस्टर. तो अभी B में तो ट्रांसफर करना है, तो मेरा रजिस्टर एक्यूमुलेटर में भी है ऑलरेडी. So keep it in mind, this is not getting cut pasted, this is getting copy pasted. So अगर एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर करना है तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन है, मूव, MOV. सो MOV B, A, तो मतलब एक्यूमुलेटर का वैल्यू B में ट्रांसफर हो गया. दैट्स इट. 3 लाइन का ही प्रोग्राम है. अभी ये लास्ट वाला HLT है, इसको हम लोग बोलते हैं हॉल्ट. Okay, so guys keep it in mind, in the HSC board exam you will be specifying it the RST 1.0, not HLT. When you will be opening your TPS, when you will be opening your board, what we say, few आंसर क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, टॉपिक वाइज पेपर सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, इवन ऑनलाइन पे भी दिए हुए हैं, तो कुछ जगह पे तुम लोग को HLT मिलेगा. सो जस्ट कीप इट इन माइंड, यू वोंट बी राइटिंग इट HLT. अगर पूरा प्रोग्राम करेक्ट है और लास्ट में HLT लिख रहा है बच्चा, तो straight away half mark is getting deducted in the board exam. That means you will be securing only 4.5 mark from the 5 marks. So ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है वो 2 लाइन, 5 लाइन, 15 लाइन्स, 20 लाइन्स के भी प्रोग्राम है which is consisting of 5 marks in the board exam. So अगर बच्चे को 4 लाइन वाला ही प्रोग्राम आ रहा है जैसा भी ये स्पेसिफाइड ऑन द स्क्रीन, सो चांदी यार कि 5 मार्क मिल रहा है 2 लाइन 3 लाइन के प्रोग्राम को, बट अगर हाँ लेंथी भी आ रहा है तो भी 5 मार्क्स इज बीइंग गिवन. सो जस्ट कीप इट इन माइंड कि यू विल बी एंडिंग द प्रोग्राम व्हाइल राइटिंग द RST 1.0 एंड नॉट टू HLT. मेक अ करेक्शन. इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर फटाफट नोटबुक में लिखो और लास्ट लाइन HLT को कट करके RST 1.0 लिख दो. ये एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है. ठीक है, डन. क्लियर विद दिस कंसेप्ट? Clear with this program, everyone? So in the arithmetic instruction over here, once again in the first instruction we were having, first group we were having the 12 instruction. In this we are having a total 14 instructions. ठीक है, very simple है. See in the arithmetic instruction, what do you mean by arithmetic instruction guys? That is addition, subtraction, multiplication and division, right?
बट ओवर ईयर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, बट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करके कोई कंसेप्ट ही नहीं है. मतलब in the microprocessor we are not able to do it any sort of a division or any sort of a multiplication होता है, but that too with the related topic with the logic gates. जैसे anding होता था, oring होता था, if you remember and gate, or gate, we have done it in the 11th standard, right? Yes, ma'am. Yeah, so that gates will be implementing it over here. So if you are clear with the Boolean equation of the gates, then only you will be clearing it with this concept. So सबसे पहले and, और, nor, XOR, राइट, ये सब गेट्स किए थे. फिर and का ही ending होता है. फिर and के लिए a and I इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं. सो आई विल सी इट वन बाय वन. सो and इंस्ट्रक्शन का y इज इक्वल टू a डॉट b था. और गेट के लिए y इज इक्वल टू a प्लस b बूलियन इक्वेशन था, इफ यू रिमेम्बर. सो वही बूलियन इक्वेशंस हम लोग को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है इन द इंस्ट्रक्शन. ठीक है. So over here first thing we'll be seeing it to the add instruction. So अभी add instruction के total 4 instructions है. So over here ADD, then ADI, then add with carry, ADC, and add immediately with carry. So these are the 4 instructions which is having the different calculatory part which we'll be seeing it. Okay, just ignore this K. यहाँ पर K हम लोग use नहीं करते. ये engineering का website है, so that's why this is being specified as a K. But in our 12th standard, we are not having any K register supported. ठीक है? Okay, so now first thing, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन जो अभी add, तो इसमें add मतलब क्या करना है? So I'll be simply adding the instruction, normal add. So अभी कैसे किसके साथ add करना है? So that too will be seen it over here. Arithmetic group instructions. ADD, ADI, ADC, ACI. ठीक है. अभी पहले फिलहाल यही देखते हैं हम लोग. Guys, tell me ADI मतलब क्या आया है? मतलब कौन सा एड्रेसिंग मोड है? Can anyone can guess? Yes. सो गए क्या? Good morning. Immediate addressing mode. Excellent Good morning, answer. ma'am. Very good. Yeah. Good morning. ADI is immediate. So कितने बाइट का होगा बच्चा? ये कितने बाइट का? 2 Very bytes. good. Except which instruction? LXI. Very good. Perfect. Excellent answer. So except LXI, all the instructions of the immediate addressing mode is of a 2 byte. LXI, which is consisting of a 3 byte, but which comes under the category of a immediate addressing mode. Okay, so अभी ADI जो है वो मेरा 2 bytes का है. Same thing guys, ACI कौन सा addressing mode? Yes. ACI once again immediate addressing mode. कितने बाइट का होगा? 2. वेरी गुड, 2 बाइट. क्यों? क्योंकि ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में था. अभी ये ADD जो है और ADC है, ये क्या है अभी हम लोग देखते हैं. सो अगर मुझे प्लेन एडिशन करना है, सो एट दैट टाइम आई विल बी एडिंग इट द ADD इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्रामिंग पार्ट. अभी कैसे ऐड करना है विल सी इट. सो इसका स्टेट क्या है? इसको फुल फॉर्म नहीं कहते, इसको स्टेट कहते हैं. So just be specific with the keywords whenever I'm explaining you in the lecture. So add register to accumulator. So मतलब अभी इसका syntax is ADD R.
Yeah. Now, very important thing is whenever in this group, whichever the thing or whichever the instruction is getting added or subtracted or added immediately or added with the carry or added immediately with the carry, by default, this all will be done with the help of accumulator only. Once again, I'm repeating it. Whichever the calculation is being done in this group, so in this group means ADD, ADI, ADC, ACI. So whether it may be addition or whether it may be a subtraction. So subtraction, it's like basically a SUB, SUI, SBB, SBI and SUI. Yeah. So these four instructions also. So that thing by default it will be getting combination with the accumulator itself. So जैसे तुम लोग अभी सोचते थे ना, मतलब पहले इसमें SHLD, ये अभी क्या था, एड्रेस है, ये किसके साथ कॉम्बिनेशन में जाएगा, H के साथ, L के साथ, LHLD सेम थिंग, LDAX तो रजिस्टर पेयर के साथ, STA जो है एक्यूमुलेटर का वैल्यू एड्रेस के साथ, उसका अपोजिट LDA, फिर MOV रजिस्टर एंड रजिस्टर, MVI 8 बिट. सो यहाँ पर सब स्पेसिफाई करना पड़ता था, बट ये इन दिस केस ADDR, अब ये R किसके साथ कॉम्बिनेशन में जाएगा, एक्यूमुलेटर के साथ. समझा? सो गाइज A प्लस R होगा या R प्लस A होगा? यस, A प्लस R होगा या R प्लस A होगा? कुछ भी चलेगा. हाँ, अभी कुछ लोग तो बोलेंगे अरे 3+2 ले लो या 2+3 ले लो, रिजल्ट तो मुझे एक ही मिलना है ना. But no, your result will be gonna same, but the while you'll be doing the presentation, जो representation of your accumulator value and the register values आता है, उसके लिए marks होता है board exam में. Keep it in mind. So over here, always and always I'll be giving the highest priority to the accumulator. So at the topmost, my accumulator value will be there with any another register. So over here, A plus R will be there. Okay, so suppose if I'm taking it ADDD, so it will be gonna A plus D and the result will be stored in the dash. कहाँ पर store होगा? रिजल्ट किधर स्टोर होगा? एक्यूमुलेटर में. Accumulator में. Very good. So the result will be gonna store it in the accumulator. So A plus D and the result will be in the A. Now one more thing guys, इसके possibilities कितने हो गए? ADDD है. So मतलब मैम हाँ बोलो. आपको कुछ बोल रहे थे ना, बाय डिफॉल्ट accumulator के साथ होता है. Accumulator के साथ होता है and result will be also gonna store it in the accumulator only. Okay, अभी ADDA possible है, valid है, फटाफट आंसर दो. अरे वैलिड है या नहीं है? A प्लस A और रिजल्ट भी A में वैलिड होगा या नहीं होगा? कंफ्यूजन नहीं होएगा शायद, क्योंकि एक्यूमुलेटर को भी इसको भी नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, आंसर इज वैलिड. यू आर थिंकिंग इन अ रॉन्ग वे कि अरे एक्यूमुलेटर का कैसे, एक्यूमुलेटर के साथ एंड ऑल ब्ला 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 ब्ला. सो इट्स नॉट लाइक दैट. जस्ट कीप इट इन माइंड. क्या है बेटा, सिंटैक्स के ऊपर फोकस करो. आर है तो आर मतलब कितने हैं मेरे रजिस्टर्स? A B C D E H L एंड M. सो ये सारे पॉसिबिलिटीज मेरे यहाँ पर यूज हो सकते हैं. समझा? सो मतलब यहाँ पर यस, ADD D यस. सो A प्लस D A के अंदर, फिर ADD M पॉसिबल है. यस, ये भी पॉसिबल है. हाँ. यस. नाउ टेल मी, ये पॉसिबल है ADD H या फिर ADD L पॉसिबल है? यस गर्ल्स बताओ. डॉली, फाल्गुनी, अदिति, वंशिका. Yes, ma'am. Yes, this is also true. Why? क्योंकि L is the individual register, H is also the individual register. But suppose if I'm taking it ADDHL, ये valid है, invalid है? इनवैलिड है. Invalid है. Now कुछ लोग बोलते होंगे कि अरे मैम तो स्टार्टिंग में बोलती थी memory is nothing but HL pair.
HL pair is nothing but memory. So I can also write it M instead of M. I can write it HL, but no. In this case, abhi ADD M, this is the valid one, but ADD HL, this is the invalid one. समझा? अभी ये सब slowly समझ में आएगा. All this thing will be getting absorbed in your mind in the very step by step format. So don't get hurry कि अरे ये नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं समझ, सब समझेगा आराम से. When you will be doing the programming now, all these concepts will be clear. Just make a note of this that ये जो भी मैंने अभी screen पे possibilities दिए है ना, ये सब possibilities again and again just write it down. मतलब just make sure that you'll be doing the practice minimum twicely of each and every instruction. जितने possibilities का तुम लोग practice करोगे ना, ये possibilities मतलब हर एक instruction के साथ क्या possible आता है. गेटिंग इट? जैसे SHLD के साथ क्या आता है, HL ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, कोई भी 4 बिट ही वैल्यू जाता है. तो ये जितना प्रैक्टिस करोगे ना गाइस, ये एट द एंड तुम लोग को 60 to 70 मार्क्स स्कोर करने के लिए हेल्प होगा. जस्ट मीन माय वर्ड्स. 44 मार्क्स का ये चैप्टर है एंड 50 मार्क्स का अलग से प्रैक्टिकल है तुम लोग को. So this is having a very highly weightage. So just make sure that you will be practicing these things with the possibilities. Don't ignore these concepts. Clear? Okay. So yes ma'am. all right. So over here अभी ADD-D है, तो मतलब I'm taking one example from this. ADD-E लिया. So अभी accumulator value is equal to 98H. ठीक है, 98H लेते हैं. अरे यार हाँ. Now and E value तुम बताओ कौन सा वैल्यू ले. 48H. ठीक है, 38H. सो अभी 98, 9 मतलब क्या है, 1001. 8 मतलब 1000. 3 मतलब 0011. 8 is once again 1000. राइट? अभी इसका एडिशन करो. यस, क्या आएगा एडिशन? सो लास्ट से करेंगे. 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0. अरे यार, 1 + 1, it will be 0, and here the carry will be generated. Clear? समझा? yes ma'am. Yeah. अभी यहाँ पर 1 + 1, here the 1 will be 1 there, and here the 1 will be there. carry 1. Yeah. Now 1 + 1 0, and once again the carry will be generated 1. ठीक है, फिर ये यहाँ पर ऊपर का 1 and the last one is 1. Understood? D0H होगा ना? Yes, perfect. So at the last, final answer is accumulator is equal to 1100. कैसे पता चलेगा? 8421 सीरीज, जहां पर 1 है उसका ये एडिशन करो. 8 + 4 12, ये 0 है, +1 13. सो 13 क्या है मेरा? क्या है फटाफट? D है, C है? So it's a D0H is the final answer. Okay. अभी कैरी इफेक्ट हुआ क्या लास्ट में गाइस? हुआ क्या? यहाँ पर देखना है सबसे, यहाँ पर ये जो 1 है इधर, मतलब लास्ट में इधर 1 आया क्या? नहीं आया ना. सो अगर 1 आया तो here I'll be writing it carry is equal to 0001H, but नहीं आया तो here I'll be writing it 00H. So keep it in mind. Make sure of this thing. Even though if carry is not generated, you will be specifying it as a carry is equal to 00H. If you are not specifying, straight away the half mark will be getting deducted in the board exam. ठीक है? So in this way you will be doing the calculation. It's very interesting and simple things, guys.
बहुत मजा आता है इसमें ये सब कैलकुलेशंस में। अभी सेम थिंग लाइक ADI में भी है, वैसे ही है, सिर्फ इमीडिएट होगा इसमें। ओके, सो आई जस्ट quickly do it for the ADI also. ADI, what does it says? Add immediate with accumulator. Okay, so इसका syntax क्या है? Syntax is ADI, I है ना, अभी सिर्फ ये एक ही MVI इंस्ट्रक्शन था जहां पर RD, 8 बिट डेटा ले रहे थे। अभी उसको अगर छोड़ दिया तो ADI, CPI, SUI, SBI, ANI, ORI, ये सारे जो इंस्ट्रक्शन है, जब सब जगह पे I है, वहां पर हर एक इंस्ट्रक्शन के साथ सिर्फ कॉम्बिनेशन में 8 बिट डेटा जाता है, ये याद रखो। जैसे अभी तक तुम लोग ने कैसे याद रखा, ऑल द इंस्ट्रक्शंस ऑफ I is the immediate addressing mode which is consisting of 2 bytes except LXI जो 3 बाइट का है, राइट? वैसे ही क्या याद रखना है, जो भी मेरे ADI हो, मतलब जो भी मेरे इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस है, उसका सिंटैक्स में सिर्फ MVI में ही RD, 8 बिट डेटा आता है, और एल्स उसको अगर छोड़ दिया MVI को तो सारे इंस्ट्रक्शंस जो I वाले हैं उसके साथ कॉम्बिनेशन में सिर्फ 8 बिट डेटा ही जाता है, बाकी कुछ नहीं आता। समझा? सो ADI, सो एग्जाम्पल क्या बनेगा, ADI आई कैन टेक इट 98H या फिर आई टेक इट एज अ ABH, ठीक है? सो अभी ये ABH किसके साथ ऐड होगा, तो 8 बिट डेटा होगा मेरा, तो ये 8 बिट डेटा जो है वो कौन सा है, ये ABH है। गेटिंग इट? तो वो किसके साथ ऐड होने वाला है, बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर के साथ। तो अभी एक्यूमुलेटर वैल्यू क्या है, तो ये बोर्ड एग्जाम में जब कैलकुलेशन पूछते हैं ना न्यूमेरिकल्स, तो उसमें स्पेसिफाई किया जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है? अभी यहाँ पर तो हम लोग खुद से लेंगे। सो 8 बिट डेटा क्या है मेरा, ABH है। सो अभी एक्यूमुलेटर इज इक्वल टू 44H लेते हैं, एंड 8 बिट डेटा है जो है मेरा ABH है, ठीक है? तो नॉर्मल कैलकुलेशन ऐसे ही करना है जैसे अभी मैंने किया है। बताओ फटाफट कैलकुलेशन करके नोटबुक में क्या आ रहा है वैल्यू, तब तक मैं भी यहाँ पर करती हूँ, बट यू ऑल्सो डू इट, व्हाट द वैल्यू इज कमिंग। सबसे पहले कौन आंसर देता है, देखते हैं। EF आया, ओके। हु इज दिस? ओमकार। ओमकार शिंदे, हातेकर लिख। ओके। सो अदर्स आया तुम लोग को आंसर? EF मैम आया। EF आया, यस। मेरे जरा एक्स्ट्रा स्पेसेस हो गए सिस्टम में, यही इशू होता है जब कैलकुलेशन करते हैं तो। यस, आंसर इज करेक्ट, EF आया, वेरी गुड बेटा। सो कैरी इफेक्ट हुआ। सो लास्ट में क्या लिखेगी, कैरी इज इक्वल टू 0 0 H। 0 0। सो डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन द 0 0 H ऑल्सो, ठीक है? अभी ये ADD ADI का है। अभी मैं फटाफट होमवर्क के लिए सम्स दे रही हूँ। जैसे वर्चुअल फंक्शंस का तुम लोग ने व्हाट्सएप किया था मुझे, वैसे ही सारे सम्स का भी मुझे एग्जांपल जो भी है कैलकुलेशन पार्ट, यू विल बी व्हाट्सएपिंग मी। सी मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट messaged me or WhatsApp me, but see guys, it's your loss only. The one who are doing very good job, you are doing it. After all, the benefit will be yours only, it's not my benefits. So just whatever the assignments I'm giving you, please make sure that you are completing on time to time. So just write down fatafat, guys. मैम हम्म, ऐड वाला जो क्वेश्चन होगा वो 1 बाइट का होगा? हाँ हाँ हाँ, 1 बाइट। अभी ये 1 बाइट का, वेरी गुड। सो यहाँ पर जस्ट राइट डाउन ADD is 1 byte, ठीक है? And ADC is also 1 byte.
Okay, just copy the assignment with me. Fatafat. ADD M is equal to 20H. ACC is equal to 3 FH. Second sum is ADI FBH accumulator is equal to 00H. ज़्यादा नहीं sums दे रही हूँ. I'm giving you only 4 to 5 sums, not beyond that. Next lecture में ज़्यादा sums मिलेंगे. I remember this sums I used to do it around 90 to 100 sums हम लोग करते थे classroom में. But here first we will complete with all the instructions and then we'll come step by step. T is equal to 6AH and A is equal to, A means accumulator, so I'm not writing it ACC. DEH. And the last one is ADD. Yes. कुछ डाउट है असाइनमेंट में? कर सकोगे? Just take a screenshot फटाफट. मैम 5th वाले में accumulator की वैल्यू. Yes, very good. That's what I was expecting from you. But the one who are smarter students, कुछ लोगों को समझ में आया होगा क्या है 5th क्वेश्चन का मतलब? ए का तो मैंने बता दिया ना पहले ही. सी थर्ड में भी तो मैम हाँ वही एक्यूमुलेटर है ना. Yes, so वही नंबर के साथ ऐड होके accumulator में अपडेट होगा. Getting? So do it and then tell me the answer. Properly calculation करके मुझे WhatsApp करो. So in the next session we'll be cross checking it. All right? Clear? Taken the screenshot? Okay. So here ADD, ADI is being completed. Next lecture will be continuing with the ADC, ACI and the subtraction part. ठीक है? So यहाँ पर addition के 4 instructions है, subtraction के 4 instructions है, like that. ठीक है? Clear? Everyone is clear? Any doubt till here? I'm giving. Yeah, yeah. मैम ADD और ADI ADD में क्या डिफरेंस है? मतलब मुझे नहीं समझा थोड़ा. बेटा थोड़ा नहीं समझ में आया, ज्यादा नहीं समझ में आया. मतलब एडिशन समझा, वो वैल्यू कैसे दे रहे वो भी समझा, बट वो मतलब पता नहीं. अच्छा, सी ADD जो है ये क्या करता है? दिस विल बी सिंपली एडिंग इट विद द रजिस्टर. सो ये दैट टू दिस विल बी एडिंग द रजिस्टर बाय डिफॉल्ट विद द एक्यूमुलेटर. तो कोई भी मेरा वैल्यू जो रहेगा रजिस्टर का वैल्यू वो एक्यूमुलेटर के साथ ऐड होगा. सो दीज आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज व्हिच वी हैव सीन इट. तो H का वैल्यू हो, L का हो, M का, D का, ये सब कुछ बाय डिफॉल्ट किसके साथ ऐड होगा? एक्यूमुलेटर के साथ. बट व्हेन आई एम कमिंग टू द ADI, तो ADI में क्या होता है? तो ये जो D लिखा है ना, तो ये D लिखा है, B लिखा है, तो इंस्टेड ऑफ दिस डायरेक्टली B के अंदर का वैल्यू होता है. E के अंदर का वैल्यू स्पेसिफाइड है क्वेश्चन में. सो दैट्स व्हाट दिस वैल्यू इज बीइंग स्पेसिफाइड ओवर हियर. मतलब ये वैल्यू जो है वो क्विकली ट्रांसफर होता है. मतलब ये केस में रजिस्टर के पास जाओ, रजिस्टर के अंदर जाके चेक करो क्या वैल्यू है, फिर पता चलता है ना पॉइंटर को कि 38 है मेरा E के अंदर स्टोर. बट वैसे ये केस में क्या होता है? डायरेक्टली ये 8-बिट वैल्यू है. तो ये 8-बिट वैल्यू मतलब क्या है? A B उसको डायरेक्टली ये वैल्यू ऐड करेगा. किसके साथ? तो एक्यूमुलेटर के साथ वो ऐड करेगा. तो दोनों में कैलकुलेशन सेम ही है, बट स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिंटैक्स इज द डिफरेंट थिंग. दैट डायरेक्टली ये 8-बिट वैल्यू उठा के स्टोर करता है. इसीलिए इसको हम लोग इमीडिएट बोलते हैं, क्योंकि ये क्विकली ट्रांसफर कर रहा है मेरा वैल्यू. गेटिंग द पॉइंट? जो कि वो केस में रजिस्टर के पास जाता है, पॉइंटर रजिस्टर के अंदर जाके चेक करता है कि वैल्यू कौन सा है. Getting the point?
So that's why it is consisting of a 1 byte और जो कि ये 2 byte लेता है क्योंकि ये immediate way में भी कर रहा है. So it is consuming some space also like that. Getting it? Okay, Rest, the ma'am. calculation is same for both the thing. Only the syntactical wise it is getting differ. Clear? Any another Yes, issue? ma'am. No, ma'am. Anyone? Thank you. Okay, welcome. Yes, anyone? यहाँ पर सब जगह पे ACC या don't get confused. Purposely लिखा है मैंने A. हाँ, so ये ऐसे सब values जो है ये तुम लोग को बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है. So just you giving this thing. ये ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं ADI FBH, ADDD और एक ही क्वेश्चन में दिए जाते हैं क्या है एक्यूमुलेटर का वैल्यू B का वैल्यू और वही वैल्यू हर एक डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस के लिए इम्प्लीमेंट करना होता है. सो दैट इज आल्सो द डिफरेंट टास्क यू कैन परफॉर्म इट. ठीक है. So that thing also we'll be covering it in the next session after completing with all the groups. ये न्यूमेरिकल्स के लिए 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन नंबर 5 में पूछते हैं एंड एक अलग से एक क्वेश्चन नंबर 3 में 3B के अंदर या फिर 4B के अंदर पूछते हैं 4 मार्क्स के लिए. सो इसका भी हाईली वेटेज है ये न्यूमेरिकल्स का. Shall I give it one more guys? और एक चाहिए क्या? करोगे कैलकुलेशन? चलेगा. क्योंकि ADD 3 हो गया, ADI भी 3 दे देती हूँ. Hardly 30 seconds में you'll do it. Yeah. Okay, so just update in your assignment. One more I have added. Okay. So that's it for the day, guys. Take a screenshot of this and WhatsApp me all your assignments, all your numericals, whichever you'll be doing it tonight only. Yeah? I don't want it in the tomorrow or day after tomorrow session. I want it today only, within 4-5 hours. Clear? Thank you.